Okay, assalamu alaikum everyone. So there are two main topics that I think we should review right now. And what we'll do today is that we will review the concept, and tomorrow we'll review the uh, any questions that you have on this. Okay. And I would recommend कि आप लोग जो भी अभी मैं आपको explain करता हूँ, I'll try to make sure कि I be specific to exams. But if you have any questions, so feel free to unmute and ask them. Okay. All right. So the first topic that you've said is acid base salts. Okay. So the very first idea in acid base salt is definitions. Okay. So you need to understand what acid is, what base is, what alkali is. These are the three main definitions. So does anybody know what acid is? Standard definition है, बार बार यही आती है. Acid gives proton. Okay. Proton, which is also called H positive. Okay, that's what acid is. It gives proton. So base is the opposite of that. It accepts proton. And alkali does it in water. So you can also think of alkali as something that dissolves in water and is a base. Yani ke it accepts proton, which is H positive, in water. Acha. A little extra thing about alkali. Alkali will always give OH minus. ठीक है. अब जरूरी नहीं है कि वो OH minus खुद से दे. For example, मैं आपको दो alkalis की example देता हूँ. One is sodium hydroxide. Sodium hydroxide, when I put it in water, so I'll put AQ to show कि मैंने इसमें water में dissolve कर दिया है. When I do that, it splits into sodium ion, which is this one, and hydroxide ion, plus hydroxide ion. और ये दोनों इसने दिया है. But the main idea here is that it has given OH minus. And because of that, it's an alkali. Is it still a base? Yes. Because अगर मैं इसको एसिड से रिएक्ट कराऊंगा तो ये H पॉजिटिव ले लेगी. अच्छा, अब इसी तरह लेट्स सपोज मैं अमोनिया को वाटर में ऐड करता हूँ. सो अमोनिया व्हेन इट रिएक्ट्स विद वाटर, it accepts proton from water. And that's an interesting thing because यहाँ पे क्या हो रहा है कि water जो कि if you look at water, तो water is made of H positive and OH minus. तो water भी acid और alkali की तरह react कर सकता है. And at the same time, water has H positive and OH minus, which is why we say that water is neutral. क्योंकि उसमें OH minus भी है और उसमें H plus भी है और वो दोनों equal amount में है, which means that they will cancel each other out and they're neutral. So in this case, ammonia being a base will accept H positive. So वो क्या करेगा कि ammonia will form ammonium ion and OH minus is left over. But if you look at it, it still gave us OH minus. And that's what alkalis do. They always give OH minus. So things that dissolve in water that give OH minus and then given the chance they accept proton, these three things are जो भी चीज ये तीनों करे वो alkali है. ठीक है. So अब हमें बेसिक डेफिनेशन समझ आ गई. एसिड क्या है? इट गिव्स प्रोटॉन. बेस क्या है? एक्सेप्ट्स प्रोटॉन. एल्कली क्या है? डज दैट इन वाटर. ठीक हो गया. तो दैट वाज द फर्स्ट थिंग दैट यू नीडेड टू नो अबाउट द डेफिनेशंस ऑफ दीज थिंग्स. अच्छा, ठीक है. अगली चीज क्या है? अगली चीज को हम बोलते हैं आयनाइजेशन या डिसोसिएशन. ठीक है. दैट इज कि व्हाट हैपेंस व्हेन समथिंग इज डिसॉल्व्ड इन वाटर. सो लेट्स टेक एन एसिड फॉर एग्जांपल. मेरे पास HCl है. HCl को मैं वाटर में ऐड करता हूँ. It will break down into H and Cl ions. So H positive and Cl minus. And this process is called ionization or dissociation. दोनों इसी के नाम है. अच्छा, इसी तरह लेट्स सपोज मेरे पास ये आयन है, ये CH3COOH. This is ethanoic acid. When I add this to water, this also breaks down. Now you remember one thing. It's an acid. And just like any acid, it should give H positive. But these acids, they have usually H written in the front. These acids, organic acids, they have H written at the end. That's one difference. जहां पे भी आपको ऐसे लिखा हुआ नजर आएगा उसका मतलब है कि ये H इसने लूज कर देना. तो अब क्या हो करेगा कि ये CH3COO
माइनस बन जाएगा और H पॉजिटिव बन जाएगा। अब मैंने इसको माइनस क्यों किया? बिकॉज मुझे पता है that this one is +1, so whatever is left, it's going to be -1. Let me give you another example. I have H2SO4. In this one, H is written in the front, and there's two of them, so it will give me 2H positive. So if this is 2H positive, this will be 2, 1 minus. 2 minus क्यों? क्योंकि अगर ये पॉजिटिव है और ये दो हैं तो टोटल पॉजिटिव 2 हो गया, तो ये पॉजिटिव 2 को कैंसिल करने के लिए -2 होना चाहिए. So it should be SO4 -2. Now at the same time, imagine if I had this CH3COO2H2. Now this thing, it is ethane dioic acid. अब ये फॉर्मूला याद नहीं करना है आपने, बट ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है. अच्छा, या इसको हम थोड़ा सा ऐसे लिख देते हैं. दिस वाज ब्यूटेन डायोइक एसिड. वैसे तो लेट्स से मेरे पास ये एसिड है COOH2, ये एक एसिड है. अब इसका मतलब क्या है कि इसमें भी उसने H जो है वो 2 दफा जाएगा. सो अब ये आपको एग्जाम में आ जाए तो आप बड़े परेशान हो सकते हैं कि ये क्या है, ये तो हमने कभी देखा नहीं. बट द की आइडिया टू रिमेंबर हियर इज दैट इट डजंट मैटर. H is always going to be written at the end of organic acids, and that is H is going to go. If you have 2 of them, they will form 2H positive, and whatever is left, it's going to be 2 of those. तो हमारे पास ये बन गया. So ये +1 है, ये -1 है, और अगर ये 2 लिखे हुए तो 2 है, 3 लिखे हुए तो 3 है. Okay, so there you go. This is ionization. Now, some acids, if you put them in water, they do it completely. If you have 1 mole of this, it will give you 1 mole of this, 1 mole of this. So MCQs में कभी कभी वो पूछ लेता है how many ions or how many moles of ions will it form. So for example, how many moles of ions does HCl form? If you have 1 mole of HCl, how many moles of ions are you going to get? 1 of H positive, 1 of Cl minus. Total कितने हो गए? 2. But if I had 1 of this, how many moles of ions will I get? 2 of this, 1 of this. So that's a total of 3. So इसके ऊपर कभी कभी MCQ आ जाता है that how many moles of ions will you get? So in this case, you're getting 3 moles of ions. In this case, we're getting 2 moles of ions because इस तरह से. Clear everyone? अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि what's the difference in strong and weak? Now, strong is something that completely ionizes, which means is that if I add 1 mole of that, all of those molecules break down. But weak is something that partially ionizes, which means that if I have 1 mole of that, then maybe a few of those molecules ionize, the rest of them stay as molecule. They don't take part in the reaction. मतलब ये है ना. So this does not mean कि वाटर में ऐड करते साथ CH3COOH ये करेगा. It simply means कि अगर वो करता है then this will be the reaction. But turns out वाटर में आप HCl ऐड करो ना, जितने molecules of HCl होंगे they will all do this reaction. But when you add this to water, not all of them do the reaction. Some of them stay as it is. They don't do the reaction. But some of them do the reaction and convert to this. So things that completely do it, यानी कि जितने मॉलिक्यूल हैं सारे के सारे रिएक्ट कर रहे हैं, we call them strong. And things that partially do it, कि जितने मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे के सारे नहीं रिएक्ट कर रहे, अब small part of them they are doing that, we call them weak. So organic acids are weak acids and strong acids are usually the inorganic acids. अब यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है कि many students write कि भाई जिसकी pH 10 से ज्यादा होती है वो वीक बेस होती है और जिसकी pH 4 से ज्यादा होती है वो वीक एसिड होता है. उसमें गलत बात नहीं है, but that does not tell me कि वो क्यों ऐसा करता है. When the examiner asks you that differentiate between strong and weak acid, या what is a strong acid, या explain what a strong acid is, तो examiner आपसे ये नहीं पूछ रहा कि आप मुझे बताएं कि अच्छा उसकी pH क्या है. Examiner आपसे पूछ रहा है कि उसकी रीजन क्या है. So the reason is that strong acids completely take part in this reaction and weak acids don't. They partially ionize. हाँ, हम चेक करने के लिए हमारे पास इंडिकेटर होते हैं कि कोई चीज स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक एसिड है
बेस है या एसिड है या किस तरह से। सो उसमें हमारे पास अगर आपने सिर्फ चेक करना है कि वो चीज एसिड है या बेस है तो आपके पास इंडिकेटर्स उसके भी हैं, और अगर आपने वीक और स्ट्रॉन्ग को चेक करना है तो आपके पास इंडिकेटर उसका भी है। सो टू चेक वेदर समथिंग इज एसिड और बेस वी हैव इंडिकेटर्स लाइक थाइमोफ्थलीन, ये आपके सिलेबस में रिसेंटली ऐड हुआ है, थाइमोफ्थलीन, ठीक है। And the color of thymophthalin is that it is blue in base but colorless in acid, ठीक है। अच्छा, देन एक पुराना पहले से सिलेबस में है मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज इज येलो इन बेस बट पिंक या रेड इन एसिड। सो ये दो याद कर लो, ना सारे याद करो। देर आर मेनी like 10 or 12 different indicators जो A levels तक आप लोग देख लेते हो। You just need to know these two, थाइमोफ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, और एक ऑफ कोर्स लिटमस, जो कि it's the easiest one to remember. It is blue in base and red or red ही बोल देते हैं, red in acid. So आ जाके we have these three. So this is the color in base and this is the color in acid. Phenolphthalein होता था but we don't need it anymore. From 2023 onwards थाइमोफ्थलीन याद करेंगे हम। अच्छा, लेकिन ये मुझे सिर्फ ये बता रहे हैं कि वो एसिड या बेस है, ये नहीं बता रहा कि वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है या किस तरह है। फॉर दैट आई हैव अनदर थिंग व्हिच इज कॉल्ड पीएच, एंड पीएच इन आवर सिलेबस गोज फ्रॉम 1 to 14। 14 से ज्यादा भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है, बट वी डोंट कंसर्न आवरसेल्व्स विद दैट। देयर आर 3 main numbers in the middle that are important for us: 1, 4, 7 and 10. Why are these important? Because अगर किसी चीज की pH 1 और 4 के बीच में होगी, या जितना वो 7 के क्लोज है उतना वो वीक है, तो यहाँ पे है तो ये वीक एसिड है, यहाँ पे है तो ये वीक बेस है, और यहाँ पे है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में आता है। और किस तरह से होता है? दैट फ्रॉम 1 to 7 वी हैव एसिड, फ्रॉम 7 to 14 वी हैव बेस, एंड एट 7 वी हैव न्यूट्रल, ठीक है। एंड दिस 7 इज वेयर यू हैव वाटर। तो अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि अगर आप 7 से नीचे जाओगे तो आपके पास H पॉजिटिव ज्यादा होता जाएगा, 7 से ऊपर जाओगे तो OH माइनस ज्यादा होना चाहिए, और एट 7 यू विल हैव सेम अमाउंट ऑफ H एंड OH। तो मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पास सेम अमाउंट ऑफ H और OH हो तो वो क्या बन जाता है? वो वाटर ही बन जाता है, ऑफ कोर्स वाटर ही बनता है ना, और क्या बनना है उसने। सो दैट इज वाई अगर आप लेफ्ट साइड पे जा रहे हो 7 के कम जा रहे हो तो H पॉजिटिव बढ़ते जाएंगे, OH माइनस कम हो गया, राइट साइड पे OH माइनस बढ़ गया, H पॉजिटिव खत्म हो गया, और मिडिल में दोनों इक्वल अमाउंट्स में, दैट्स व्हाई वी कॉल इट न्यूट्रल। नाउ टू चेक द pH और whether something is strong or weak, we have universal indicator. An universal indicator gives us the rainbow colors. So it starts with red, orange, yellow, green. Remember that it's green at neutral, blue, violet. So that's the universal indicator. So अब अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि बताएं एसिड है या बेस है, तो यू हैव दीज इंडिकेटर्स। बट अगर वो आपसे पीएच बताता या आपसे कहता है स्ट्रॉन्ग और वीक का डिफरेंस बताना है, तो वो ये है, नेवर यूज लिटमस टू नो वेदर इट्स अ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड। लिटमस विल ऑलवेज गिव यू दीज कलर्स regardless of pH. pH and universal indicator are the only way to know the strength of acid or base, but the nature whether something is acid or base उसके लिए हम ये यूज करते हैं। Clear so far? तो ये हमारे पास second main concept है for this chapter. The first one was definitions: acid, base, alkali, strong acids, weak acid. ये 5 definitions. अच्छा, and the second one is 5 indicators या 5 ways of finding indicators, 3 of these and 2 of these. Now the next thing that we have is the reactions, कि कोई चीज बिहेव कैसा करती है। हमें डेफिनेशन पता लग गई, हमें पता लग गया कि एग्जाम में उसे चेक कैसे करते हैं। तो अगला स्टेप ये है कि अच्छा
वो बिहेव कैसा करेगी. So these are called characteristic reactions. I don't know how to spell it. Characteristic behavior. The reason I'm calling them characteristic behavior is because these are not all the reactions that acid or base do, but these are definitely the reactions that make anything acid or base. Okay? So अगर आपको इनके अलावा कोई भी रिएक्शन करता हुआ एसिड नजर आए तो वो एज एसिड रिएक्ट नहीं कर रहा, वो किसी और तरह रिएक्ट कर रहा होगा. फॉर एग्जांपल सल्फ्यूरिक एसिड जो है, इट कैन एक्ट एज एन एसिड बट इट कैन आल्सो एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. सल्फ्यूरिक एसिड दोनों तरह बिहेव करता है, बट जब वो कैरेक्टरिस्टिक बिहेवियर शो कर रहा है व्हेन इट्स रिएक्टिंग, अभी मैं आपको रिएक्शन बताता हूँ, व्हेन इट्स डूइंग एनी ऑफ दीज रिएक्शन, दैट्स व्हेन वी से इट्स एक्टिंग एज एन एसिड. बट अगर वो इनके अलावा कुछ भी कर रहा है ना दुनिया में, then it's not acting as an acid. So इसके ऊपर MCQs आ जाते हैं that in which of these equations is sulfuric acid not acting as an acid. Now you'll be like, एक चीज है वो sulfuric acid है फिर भी it's not acting as an acid. Of course it's not. And then you will have to pick कि वो क्या कर. ठीक है? If it's not any of these reactions, then वो जो मर्जी करे, वो acid की तरह behave नहीं कर रहा, वो कुछ और तरह behave कर रहा, and that's fine. So I'll give you the 3 reactions of characteristic behavior. First one is that acids can react in redox reaction. So usually students don't look at it as a redox reaction. Students इसको अक्सर इस तरह से देखते नहीं तो परेशान हो जाते हैं. So if you are one such student, फौरन ask me question. Redox reaction acid कैसे करते हैं? So one typical redox reaction that acids do is कि acid plus metal makes hydrogen gas plus salt. What's happening here? This is displacement reaction. Because many acids have, when they react with metal, and many metals are more reactive than H positive, they can simply displace it. So if metal is more reactive than H, and of course you will have to remember the reactivity series for that, so make sure कि वो आपको याद हो. ठीक है, वहां से आपको देखना पड़ेगा. Then what happens? I'll give an example. I have HCl and I add some calcium in it. Now calcium is above hydrogen in the reactivity series, which means calcium will displace hydrogen. So calcium being a metal, वो solid है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, और H जो कि H पॉजिटिव है वो उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, and you will get hydrogen gas. And that's a gas, so it will bubble out. Sir, could you come again? Yeah, sure. So the calcium here, it is more reactive than hydrogen here. So what calcium can do is it can take its place. कैसे? Calcium will lose electrons, hydrogen will gain electrons. क्योंकि reactivity series क्या है? It just tells you कौन सी चीज जल्दी इलेक्ट्रॉन देती है और कौन सी चीज जल्दी इलेक्ट्रॉन लेती है. So for example, अगर मेरे पास ये है ना reactivity series, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो ये हो सकता है कि कैल्शियम अपने इलेक्ट्रॉन लूज करे और मैग्नीशियम उन इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले, अगर मैग्नीशियम इज पार्ट ऑफ अ रिएक्शन. ठीक है? सो we call it displacement. We simply say that they have displaced each other. So what can happen is that calcium can displace hydrogen and take its place, giving us calcium chloride. अब ये फॉर्मूला मैंने कैसे बनाया? Just remember this. You make ions, H plus Cl minus, and calcium stays as it is. But when they displace it, hydrogen becomes neutral and calcium becomes ion and chloride ion molecule. So how do you react these things? Ca and Cl, 2 इधर 1 इधर, तो हमारा ये reactions complete हो गए. What is not changing? What is spectator? Cl minus. ये दोनों sides पे same है, क्योंकि वो तो reaction इससे नहीं ले रहा ना. The reactions between calcium and hydrogen, calcium is more reactive, वो hydrogen को displace कर रहा है. So we can clearly see how the reaction happens.
सो ये एसिड का redox reaction है कि metal which is more reactive than H positive will simply displace it and we will get this. अच्छा, a couple of important things to note here जिनको हम observations कहते हैं. सबसे पहली बात, लेफ्ट साइड पे मेरे पास कैल्शियम सॉलिड है, राइट साइड पे मेरे पास कोई कैल्शियम सॉलिड नहीं है. So that means I will say that solid dissolves. अच्छा, left side पे I don't have any gas. Right side पे I have a gas. So I'll say that bubbles of hydrogen released. You observed. You can also write effervescence. You can also say कि bubbles of gas that pops in a flame. वो सारा कुछ यहाँ पे आपको नजर आ रहा है. So these are two observation things that you can clearly see happen during a reaction. Okay. So हमें यहाँ से पता चलता है how something takes part in the reaction. So ये एक typical acid redox reaction. अब I know कि nobody I've seen who teach this वो इसको redox बोलते हैं, लेकिन examiner आपको टेस्ट करता है इसके ऊपर that are you able to connect reactivity series, redox reactions, ionic bonding, all of that is hidden inside this reaction. And you need to be able to make these connections to be good chemistry student. वरना तो बहुत आसान है, याद कर लो कि अच्छा एसिड प्लस मेटल मेक्स हाइड्रोजन प्लस सॉल्ट, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है, उसके पीछे रीजन रिएक्टिविटी सीरीज है. विच मीन्स एट द सेम टाइम कि अगर मैं यही रिएक्शन कैल्शियम की बजाय कॉपर के साथ करूं तो क्या होगा? व्हाट डू यू एक्सपेक्ट? Sir, nothing to happen. Nothing will happen. Absolutely. शाबाश. ऐसा क्यों हो रहा है? Why has the reaction not happened? Sir, because copper is not more reactive than hydrogen. Exactly. Sure. जहां पर कॉपर अगर अपने इलेक्ट्रॉन लूज करे तो हाइड्रोजन लेता ही नहीं है. वो हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, तो वो कॉपर से क्यों इलेक्ट्रॉन लेगा? इस वजह से कॉपर इज नॉट एबल टू रिएक्ट. वेरी गुड अब्दुल्ला. So that is what happens here. The things that are more reactive, only they will be able to displace hydrogen. And that is why it's a redox reaction. अच्छा, जरा equation को देखना, मैं इसको balance कर लेता हूँ. How does this equation show us that this is a redox reaction? For that, look at the charges. Hydrogen is +1, calcium is 0, hydrogen gas is 0, calcium is +2. Do you notice that hydrogen went from +1 to 0? That shows it has gained electron, which means it is reduced. And calcium went from 0 to +2, which shows it has lost electron, which means it is oxidized. So ये एक बहुत जबरदस्त relation है that connects 4 different chapters: acid bases, redox, metal reactivity, and ionic bonding. इन चारों chapters को combine करता है ये reaction, which is why it's so important. समझ आ गया? So how do you know something is an acid? बहुत simple है. I added to a reactive metal, हाइड्रोजन गैस निकलना शुरू हो जाएगी. अगर आप मेटल में कोई भी लिक्विड ऐड करो और वहां से हाइड्रोजन गैस निकलना शुरू हो जाए, आपको फौरन पता चल जाता है कि दिस इज एन एसिड. अगर आपको मैं बताऊं कि ये एक रिएक्टिव मेटल है और एक अननोन एसिड दे दूं, आपको पता ही नहीं है कि वो एसिड है, मैं आपको एक अननोन लिक्विड दे देता हूं, एंड ऑल यू सी is the moment you add metal to that unknown liquid, you get hydrogen gas. You can be absolutely sure कि ये acid है. इसी तरह Sir, if could I you give repeat? you exam में उसने आपको कहा है कि a student has found an unknown bottle of a colorless liquid. How can the student be sure that this is an acid? Design an experiment. बहुत आसान है. एक reactive metal लो, add it to the acid, the liquid.
If you get hydrogen gas, you know it's an acid. समझ आई बात? Yes, sir. Acha. Similarly, let me give you another example. Examiner says a student has found an unknown solid X. हमें नहीं पता ये X क्या है. How can the student be sure that this is a reactive metal? आपसे को भाई बहुत सिंपल सी बात है. Add it to acid. नाइट्रिक एसिड में डाल दो, सल्फ्यूरिक एसिड में डाल दो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोआयोडिक एसिड में डाल दो. If it gives hydrogen gas, it's definitely a metal. Get it? तो हम इस रिएक्शन को इस तरह भी यूज कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट डिजाइन में. So do you understand how important this reaction is? It's not just memorizing this equation that's important. It's important to understand what's happening here. So this is the first characteristic behavior of acids. अब दूसरा characteristic behavior देखते हैं acid का. The second behavior that acids do, we call it a neutralization behavior. पहला क्या था? Redox. और ये है neutralization. इसमें क्या होगा कि acid plus base gives salt plus water. अब base दो तरह की हो सकती है, solid और एक्वस. फर्क क्या है? अगर सॉलिड है तो वो इनसॉल्युबल बेस है, और अगर एक्वस है तो वो एल्कली है. तो बेस आपके पास दो तरह से आ गई. एक हो गई जिसको हम बोलेंगे सॉलिड बेस यानी कि इनसॉल्युबल, और एक हो गई जिसको हम बोलेंगे एल्कली व्हिच इज एक्वस. बट दोनों सूरतों में, नो मैटर वेदर इट्स बेस व्हिच इज इनसॉल्युबल और वेदर इट्स एल्कली, it will do the same reaction, neutralization reaction. And why is that? Because acid gives proton, base accepts proton. So I'll give you an example of each. मेरे पास HCl है और मैं इसको NaOH से रिएक्ट कराता हूँ. ठीक है, मुझे पता है कि ये एक्वस है, ये भी एक्वस है, और इससे बनेगा क्या बनेगा? इसने H देना है, उसने OH देना है, क्योंकि वो एल्कली है. एल्कली गिव्स OH. सो ये OH और ये H मिलके दे विल मेक वाटर, एंड व्हाटएवर इज लेफ्ट NaNCl, it will make NaCl. Now here's the challenge when you're practically doing this. This is a colorless solution. This is a colorless solution. You have no idea कि इनको रोकना कब है. दो कलरलेस चीजें मिक्स कर रहे हो, रिएक्शन हो जाएगा, ना कोई गैस आ रही है ना कोई कलर चेंज आ रहा है. आपको कैसे पता कि रिएक्शन कंप्लीट हो गया? नहीं पता चलेगा ना. विच इज वाई प्रैक्टिकली दिस इज डन बाय टाइट्रेशन. कैसे? यू टेक वन ऑफ दीज. टाइट्रेशन क्या है? वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ टाइट्रेशन. दो कलरलेस लिक्विड्स हैं, उनको मिक्स करना है. कितना मिक्स करना है ये मुझे इंडिकेटर बताएगा. इट्स लाइक व्हेन यू पार्क अ कार. आई डोंट नो इफ यू गाइस ड्राइव और नॉट. आई थिंक यू आर टू यंग फॉर दैट. बट आप गाड़ी पार्क कर रहे हो, हाउ विल यू नो व्हेन टू स्टॉप? यू विल नीड सम इंडिकेटर. वो आपके गाड़ी के अंदर पार्किंग असिस्ट हो सकता है, वो आपका कोई दोस्त हो सकता है जो बाहर खड़ा हुआ आपको बता रहा है, वो आपकी शीशे हो सकते हैं जिससे आप खुद जजमेंट ले लो. बट यू नीड समथिंग टू टेल यू व्हेन टू स्टॉप. इट इज द सेम विद एसिड एंड एल्कली रिएक्टिंग टुगेदर. दे आर बोथ कलरलेस. You need something to tell you when to stop. So you take two things, you mix them. Mix करने के लिए क्या है? Conical flask. बेहतरीन चीज है मिक्स करने के लिए. क्यों? It has a narrow neck, तो इसमें से स्पिल नहीं करता वो, और मिक्स करना आसान है इसमें. अच्छा, तो आप एक चीज पिपेट से इसमें ऐड कर देते हो. ठीक है जी, ऐड होगी. दूसरी चीज ब्यूरेट से ऐड करोगे. ठीक है, और बीच में 1 or 2 drops of indicator which will tell you when to stop. And how will it do that? Let's suppose मैंने HCl ऐड किया, पिपेट से
25 cm क्यूब ऐड कर दिया, ओके डन, मुझे पता है मैंने 25 ऐड कर दिया, मैंने उसमें एक दो इंडिकेटर के ड्रॉप डाल दिए, कर दिया। अब मैंने उसमें ब्यूरेट में से NaOH ऐड करना, ठीक है। द मोमेंट आई सी अ कलर चेंज आई विल स्टॉप, दैट इज माई इंडिकेटर, दैट्स द होल पॉइंट ऑफ गेटिंग एन इंडिकेटर। वो मेरा पार्किंग असिस्ट है, वो मेरा वो DHA वाला ब्लू कपड़ों वाला लड़का है जो मुझे बता रहा है कि भाई रुक जाओ। So I'm using this, using an indicator, and I know when to stop based on the color change. The moment there's this color change, or even a small color change, I'll stop. So that is titration. कि आपने पहला लिक्विड 25 cm क्यूब एग्जैक्ट डाला है, उसमें इंडिकेटर डाला है, and when the color change happens, no matter what amount you have, the volume from burette of the other liquid, you will stop and you will know that I have completed the reaction, and this is a neutralization reaction. So why do we add indicator after the pipette? Because You डालते हैं indicator, because देखो अगर मैं इसको इसमें डायरेक्ट ऐड करूंगा तो मुझे कोई कलर चेंज नजर नहीं आएगा, देयर बोथ कलरलेस, बट व्हेन आई ऐड एन इंडिकेटर तो मुझे कलर चेंज नजर आता है। इमेजिन इफ आई हैड HCl एंड आई एडेड दैट हियर, और मैंने उसके ऊपर थाइमोफ्लिन ऐड कर दिया। अब HCl इज एन एसिड, थाइमोफ्लिन इज कलरलेस, मुझे कलरलेस ही है, आई एम स्टार्ट टू ऐड NaOH। The moment I add enough NaOH कि सारे का सारा एसिड रिएक्ट कर गए, I will see a slight blue color. Thymophylline gives blue color in base. So the moment I see that blue color, I'll stop. तो मुझे पता चलेगा मैंने कितना NaOH ऐड करना है। Get it? And the reason I'm doing that is because ये दोनों aqueous हैं और दोनों colorless हैं। तो ये alkali को कैसे behave यूज करते हैं ये आपके सामने। Now imagine if मेरे पास alkali नहीं होती, which is aqueous, मेरे पास बेस होती, तो बेस तो सॉलिड है ना, तो सॉलिड को तो मुझे इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं है। I can see the solid reacting or not reacting. Why? Because when a solid reacts, it starts to dissolve. The moment I see the solid is not dissolving anymore, I'll know कि हाँ ठीक है रुक जाओ, reaction हो गया। Get it? So when I add an acid to a base, let's say insoluble base कोई भी ले लेते हैं, मेरे पास H2SO4 है and I add magnesium hydroxide to it. Now magnesium hydroxide is not completely soluble, slightly soluble होता है, completely soluble नहीं होता, ठीक है। तो अब क्या होगा when this reacts, so I will get again hydrogen and OH react, so I'll get H2O plus, अच्छा बल्कि एक काम करते हैं, हम मैग्नीशियम ऑक्साइड ले लेते हैं, हम लेते ही नहीं हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड तो कंप्लीटली इनसॉल्युबल होता है, इट्स अ सॉलिड। अब दिस विल रिएक्ट विद दिस इज बेसिक, दिस इज एसिडिक, they will react, make water, and whatever is left, magnesium and sulfate, they will form magnesium sulfate salt, which is soluble. So I get this. Now I can see the solid dissolve. I don't need an indicator. I start adding acid in magnesium oxide. I will start seeing कि ये dissolve हो रहा है। अब notice करना एक बात, the salt I'm making is aqueous. So whenever you do this reaction, please note it down, guys. Because we want aqueous salt, we will add solid in excess. क्यों? So that I can filter and separate the aqueous salt. So salt prep में आपसे वो कहता है कि रिएक्ट करवा के दिखाओ, भाई बहुत आसान है, मैग्नीशियम सल्फेट बनाना है, मैग्नीशियम ऑक्साइड सॉलिड लो, पुट इट इन एक्सेस। 1 मार्क होता है इस चीज का कि आपने एक्सेस बताया, एंड द रीजन वी आर डूइंग इट इन एक्सेस इज बिकॉज द सॉल्ट इज सॉल्युबल। यहां पर हमारे पास कोई तरीका नहीं है एक्सेस करने का, क्यों? क्योंकि ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है, फिल्टर करके सॉल्ट भी एक्वस ही है, तो हमें टाइट्रेशन करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास बड़ा क्लियर मेथड है, वी टेक सॉलिड इन एक्सेस so that we can filter and separate the aqueous part.
So it all comes down to your perspective. आप इसी रिएक्शन को एसिड बेस बिहेवियर के लिए देखो तो आपको नजर आ रहा है कि न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, वाटर बन रहा है. आप इसी रिएक्शन को सॉल्ट प्रेप के लिए देखो तो आपको नजर आ रहा है कि मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्ट बन रहा है. It all comes down to what your focus is. Are you focused on making water? So yes, this is neutralization reaction. Are you focused on making salt? Then yes, that is what's happening here. Sorry, where did it go? Yeah. तो अगर आप एक तरह सोचो तो you have method number 1 of making salt because you made calcium chloride here. You have method number 2 of making salt, which is sodium chloride. You have method 3 of making salt, which is clear here. Acha. Last characteristic reaction of acids is that acid with metal carbonate. Now, metal carbonate, many of them behave like base, but not all of them. So what does a metal carbonate do? Metal carbonate, whenever it reacts with acid, it breaks down and it gives you carbon dioxide and a base. And that base reacts with acid to make water and salt. Metal carbonate is not base. It can be basic, which means it can behave like a base. वो सारे metal carbonate base नहीं होते हैं. They can react like a base. ठीक है? अच्छा. So let's take an example. I have sodium carbonate. I reacted with HCl. Okay. Step 1. The carbonate in the presence of acid will definitely break down and give me carbon dioxide. So imagine अगर इसमें से CO2 निकाल दूं तो पीछे क्या बचेगा? Na और O. So NaCl plus H2O. उसको बैलेंस कर लेते हैं. There you go, balanced. अब जरा इस रिएक्शन को देखो. This is solid, this is aqueous, this is gas, this is liquid, this is usually aqueous. How many different observations can we see? We can see the solid dissolve. क्योंकि लेफ्ट साइड पे सॉलिड है, राइट साइड पे सॉलिड नहीं है. So we have a clear observation. Solid is dissolving. हमें यहाँ पे भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, हमें सॉलिड डिसॉल्व होता नजर आएगा. अच्छा, हमें गैस प्रोड्यूस होती, we can observe that the gas is being made. So we will see that there are effervescence or gas bubbles. You can see that. अब यहीं पे अगर एग्जामिनर आपसे कहता है that a student found an unknown solid, how can the student know that this has carbonate in it? तो बताओ, what will you say? So carbon dioxide is being produced. When carbon So dioxide that is we can see produced? effervescence. Sure, but मैं आपको एक unknown metal carbonate दे रहा हूं. आपको नहीं पता कि ये क्या है. How can you confirm कि इसमें carbonate है? You add acid, and that is when carbon dioxide is made. So you have to, I think you missed that part. That you add acid, okay, and it gives carbon dioxide. Clear? Acha. Yes, sir. I give you a random liquid and some carbonate. How can you be sure that the random liquid is acid? What will you write? Sir, could you repeat your question? A student is given a random unknown liquid and calcium carbonate. How can the student be sure that the liquid is acid? Carbon dioxide is formed. When they mix together. You know? So if the student mixes them together, carbon dioxide is made, and that is how they'll know for sure कि yes, ये क्या है? ये carbonate है. आ गया समझ? Yes, sir.
So we can clearly see. अच्छा मुझे एक और बात बताओ, अब एग्जामिनर कैसे आपको इस पे टेस्ट करता है? एग्जामिनर वो जमाने चले गए कि जब एग्जामिनर आपसे कहता है कि अच्छा बेटा इक्वेशन बताओ, रटा आपने, मारा कि नहीं मारा। अब एग्जामिनर को भी पता है कि स्टूडेंट्स ने ये चीजें याद की होती हैं, वो आपको रिलेट करवाता है इसको डिफरेंट चैप्टर्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, एग्जामिनर में से दैट व्हाई इज एसिड रेन बैड फॉर मार्बल बिल्डिंग्स? How can we connect these? How is that relevant to this chapter? Marble has calcium carbonate in it, which is limestone. Limestone is present in many marbles. For example, Sangemarmar, which is very popular in the Mughal architecture, or even in जो हम बनाते हैं आजकल भी बिल्डिंग्स, मस्जिदें, घर, उनके अंदर संगमरमर लगाते हैं ना. So limestone is present in that. Now, if I tell you that limestone has calcium carbonate, can you tell me why acid rain is bad for that building? So it will basically break it down. And shabash, shabash, what will it do? If I have a building, a statue, a gumbad of a masjid, और उस पे acid rain गिरती है, उसको break down कर देगी ना? And what will it do? The marble statue, gumbad, जो भी है, it will convert into bubbles of carbon dioxide and an aqueous salt, which will dissolve in the rain, go down the drain. Yes, sir. है ना? So the building will lose its shape. It will be damaged. कभी मौका मिले ना इटली जाने का, तो आप देखोगे कि वहां पे बहुत सी बिल्डिंग्स हैं जिनके उन्होंने जगह जगह मार्बल स्टैचूज लगाए हैं या बिल्डिंग्स को खूबसूरत बनाया हुआ है, लेकिन दे हैव ऑल बीन defaced. And it's not because somebody did some hooliganism or vandalism there. It's simply कि एसिड रेन हुई और वो स्टैचू जो बारिश में खड़ा था खराब हो गया, डिफेस हो गया. And that is sad. ताजमहल की आप पिक्चर्स देखोगे ना, वो येलो येलो हुआ है, वो सारे का सारा, क्योंकि उसकी आउटर कवरिंग जो है वो सारी बारिश ने तबाह करके रख दी. So you are able to connect this basic reaction, which is one of the important characteristic behavior of acid, with acid rain, environmental consequences and all of that. अच्छा, एक और इस पे क्वेश्चन करता हूँ. ओ लेवल्स में कभी ये क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन मुझे एक बात बताओ, over the years the size of cowrie shells has decreased on average. How is that related to industrialization? सोचो, cowrie shells होते हैं, समंदर में छोटे छोटे जानवर हैं, उनके shells होते हैं जो मार्बल से बने होते हैं, ये कार्बोनेट से बने होते हैं, और ओवर टाइम, ओवर द लास्ट सेंचुरीज, उनका साइज एवरेज रिड्यूस होना शुरू हो गया. पहले वो बड़े साइज के होते थे, अब वो छोटे छोटे साइज के होते हैं. व्हाई डू यू थिंक दैट इज? और उसका इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या ताल्लुक है? Sir, I'm not sure, but I think that all the industrial waste which flows in the water affects those shells. You are absolutely right. It does. फैक्ट्रीज के धुएं से एसिडिक फ्यूम्स निकलते हैं. जो वेस्ट होता है उसमें एसिडिक मटेरियल्स होते हैं. Those will make the water more acidic or the rain more acidic. And when that rain or that water touches these shells, उनके साथ रिएक्ट कर जाता है, तो शेल डिसॉल्व हो जाता है, तो ओवरऑल उसका साइज कम होना शुरू हो जाता है. वेरी गुड अहमद, शाबाश. So do you see the connection we have here between acid rain or the environmental consequences of our activities and the characteristic behavior of what acid does?
So is everybody clear on these three reactions? Pehla reaction, redox. Acid when they combine, acid will release hydrogen gas. We can use it to know whether something is metal, or we can use it to know whether something is acid. Second, neutralization. Acid and base, they react to make salt and water. We can do it in lab using titration if we have alkali, or using acid, using solid in excess if we have base. And third reaction, metal, carbonate, and acid, they will give us carbon dioxide. You can use it to check whether something is acid or whether solid is carbonate, or you can also use it to make salt. Why? Because you can clearly see solid being bubbles coming out and solid dissolving. तो इसका मतलब है कि जब भी मुझे इस रिएक्शन से सॉल्ट बनाना है तो मुझे यूज सॉलिड इन एक्सेस. Is everybody comfortable with this? So now tell me, how do we know that a random liquid is acid? Now we know 4 methods. कोई रैंडम लिक्विड एसिड है, पहला मेथड क्या है? उसको मेटल से रिएक्ट कराओ, हाइड्रोजन गैस आती है, तो आपको पता लग जाएगा एसिड है. हाउ विल यू नो कि ये गैस जो आ रही है ये हाइड्रोजन गैस है? वो तो बबल्स होंगे. हाउ विल यू नो? Sir, by the glowing splint. It makes a pop sound. Burning splint, not glowing splint. Burning splint. Okay. All right. Second reaction of knowing whether something is acid. Add an alkali or a base in it. If it reacts with salt and water, it's an acid. Third reaction of knowing whether something is an acid. Add a carbonate in it. If it gives you carbon dioxide and water, it's an acid. If it doesn't, it's not. So that is acid, base, and salt. All right, everyone? Sir? Yes. Sir, in salts there were 3 types. One was filtration, the other was titration, and what was the third one? What do you mean? Sir, when we're preparing salts, there are 3 methods, right? One is filtration, Yes. one is titration, and the last one I'm not sure about. Precipitation. Yes. So whenever you're preparing salts, salt prep ke liye, you need to understand 2 things. First, is the salt soluble? If it is, then the method is different. If it's not, method is precipitation. What is precipitation? You take 2 soluble salts, one salt that is aqueous and the other salt that is aqueous. They will react, give you solid, which is the insoluble salt, or the aqueous salt. अच्छा, if it is empirical formula वगैरह वो करा दे सर. करवा देते, just a minute. अच्छा, if it is soluble and it is also snap, तो फिर आप क्या करते हो कि आप टाइट्रेशन करते हो. आप एसिड लेते हो, एल्कली लेते हो, आपको सॉल्ट मिल जाता है. लेकिन अगर वो स्नैप नहीं है, snap means sodium, nitrate, ammonium, potassium. If it's not any of them, then you simply do a neutralization reaction. या आप क्या करते हो कि आपके पास 2 ऑप्शन है. आप एसिड के साथ एक्सेस सॉलिड ऐड करते हो. अब वो एक्सेस सॉलिड क्या हो सकता है? वो मेटल हो सकता है, वो बेस हो सकती है, वो कार्बोनेट हो सकता है. ठीक है, लेकिन वो एक्सेस में होना चाहिए. और इससे आप ये, आई विल गिव एन एग्जांपल. लेट्स से मुझे सोडियम क्लोराइड बनाना है. तो सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल है, यस. स्नैप है, यस. तो फिर मैं टाइट्रेशन करूंगा. मैं एक एसिड लूंगा जिसमें क्लोराइड होगा,
मैं एक एल्कली लूंगा जिसमें सोडियम होगा, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, सोडियम क्लोराइड बन गया। अच्छा, अब मुझे लेट्स सपोज एक सॉल्ट बनाना है विच इज सॉल्युबल, वो है सॉल्युबल बट नॉट स्नैप। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम सल्फेट। सो मैं एसिड लूंगा जिसमें सल्फेट होगा, सो H2SO4, और एक्सेस सॉलिड लूंगा जिसमें मैग्नीशियम होगा। अब वो मैं मैग्नीशियम मेटल ले सकता हूँ, वो मैं मैग्नीशियम ऑक्साइड बेस ले सकता हूँ, वो मैं मैग्नीशियम कार्बोनेट सॉलिड ले सकता हूँ। बट इन ऑल थ्री केसेस, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इट हैज टू बी इन एक्सेस। अच्छा, मुझे एक सॉल्ट बनाना है विच इज नॉट सॉल्युबल, देन फॉर एग्जांपल I want to make silver chloride. Silver chloride is insoluble salt. So I will take silver nitrate plus sodium chloride. They're both soluble salts. But when they react, they give me silver chloride and sodium nitrate. और वो दोनों मैं filter कर लूँगा. And that is how you know how to prepare salts. ठीक हो गया? Actually. What else? आपने empirical formula का बोला. Empirical formula के ऊपर ना एक छोटी सी वीडियो है 5-7 मिनट की. I will share the link with you. You can watch that. ठीक है? It has different examples in it as well. I think it will be better than me just giving you the main concept. आप वो example भी देख लेना. ठीक है? I'm sharing the link in the chat. Okay, sir. All right. Here you go. Okay, so I have to go now. I have another class. But let me know if you have any questions. Group में you can tell me if there's any question. I'll be happy to help. Okay. मैं ग्रुप में ही लिंक भी भेज देता हूँ. All right then. Allah Hafiz, sir. Allah Hafiz. Take care. Good luck. We can keep a lesson Yeah. tomorrow and bring any question that you have. वो हम solve कर लेंगे. Okay, sir. Okay. Allah Hafiz.